Welcome back in the third session of quadratic equation. In the first session, we understood what is actually quadratic equation. अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि quadratic equation का definition क्या है and how it is formed and solutions क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में हमने discussion किया था. If you look at the second video, solutions निकालने के तरीके हमने start किया. The first method is factorization method. So if you are looking for factorization method, it is shown in the second video, and this is the third video where I'm going to explain you the second method of finding out the solution, that is a perfect square method, right? हालांकि इसके ऊपर पिछले कई सालों में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, राइट? नाउ लेट अस गो टू आवर स्क्रीन. Let me share the screen now. Okay, so I hope you are able to see the screen now. All right. Okay, now all right. So solution by completing a square, ये मेथड में डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम्स के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, so I don't need to do anything on this page. But directly let us come to this page. So if you look at this, ये जो क्वेश्चन है, in the previous part we have already solved this question. So how to solve this question, but now this time it is a perfect square method, completing the square method. Okay, let me write the question once again. The question is x square okay. Now very important thing, first step, always bring the constant term on the right hand side. Do you know what is constant term? Constant term is जिसके साथ x या y या m जो भी variable है, जिसके साथ कोई नहीं है, that is constant term. If there is no variable, that means it is a constant term. So the first step is bring the constant term on the other side, rest of the terms on one side, right? Now let me explain you. This is something which is textbooks में थोड़ा अलग आपको explain करना. Okay, this is the first term. Let me label this as first term. This is my middle term for the perfect square. Perfect square किस लिए होता है? देखिए, so you are aware that a plus b whole square. What is a plus b whole square? That is a square plus 2ab plus b square. Then a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. So vice versa, if I have a square plus 2ab plus b square, I'll write it as a plus b whole square. If I have this a square minus 2ab plus b square, I'll write it as a minus b whole square. फर्क क्या दोनों में? इधर प्लस है और इधर माइनस है. That is the only difference. Now the first term and middle term is there with me, right? I will have to adjust the last term. Now this formula is different from something which is not which is what is taught to you or given in the textbook. But let me tell you one thing, formula is correct. Number one, you will get 4 marks. Number two, and this will be useful throughout your life. Whenever you come across such questions, it will be helpful for you. As I told in the previous class also, this chapter is going to get continued in 11th standard if you are going to appear for JEE. तो ये चैप्टर जेई के बुक में वापस है, राइट? सो दिस इज लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म. दिस इज माय फॉर्मूला. Last term is middle term का whole square divided by 4 into first term. So in my case, last term will be, what is my middle term? This is my middle term. पूरा का पूरा middle term उठा लो. So middle term is x का square divided by 4 into, what is my first term? पूरा का पूरा first term उठा लो. पूरा का पूरा first term उठा लो. Right? Now you can observe, ये x square है, ये x square है, ये cancel हो गया. मेरा last term क्या बनता है? 1/4. Now to adjust everything, what I'm going to do is I'm going to add
1/4 on left hand side to adjust the last term to make it a perfect square. ये सारा काम क्यों चल रहा है कि अपने को perfect square बनाना है left hand side पे. So naturally अगर मैंने left hand side पे 1/4 ऐड किया है तो right hand side पे भी मेरा काम बनता है कि ये 1/4 ऐड कर दूं. Alright, now फिर से मैं एक बार right hand side solve करके रखता हूँ, then we will go to the main part. So this is 1 because ये 20/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम लेना है, जो भी आप बोलते हो वैसे. So this is 4 into 20, that is 80 divided by 4. Hence x square plus x plus 1/4 becomes 81/4. Now this also means left hand side, as you are aware, it is a perfect square. Perfect square किसका है? x plus 1/2 का whole square is equal to 81/4. Alright, now very important thing, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, सर हमको कैसे पता चलेगा प्लस है माइनस है, क्या लिखना है इधर. आई एम गिविंग यू अ वेरी इजी फॉर्मूला. इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट x लिख दिया यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट 1/2 लिख दिया यहाँ पे, और ये जो साइन है ना बीच वाला, ये उठा के इधर लेके आओ. दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस, राइट. दैट मीन्स x plus 1/2 अगर मुझे लिखना है, दैट मीन्स इफ आई टेक द स्क्वायर रूट, so x plus 1/2 because it was square. Now स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज प्लस और माइनस 2. नाउ हियर यहाँ से असली खेल स्टार्ट होता है. लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग. दिस इज द सेम मेथड व्हिच व्हेन वी एक्सटेंड, this is the same method when we extend it gets converted into formula method. Alright, so formula method और ये method दोनों एक ही है indirectly, okay, because यही proof हम लोग यूज करेंगे उसको प्रूव करने के लिए. Now x plus 1/2, x plus 1/2 is equal to 9/2 और x plus 1/2 is equal to minus 9/2. दो पार्ट्स है, या तो प्लस या तो माइनस, राइट. दैट मीन्स x का वैल्यू है 9/2 minus 1/2 और x का वैल्यू कितना है, और x का वैल्यू कितना है minus 9/2 अपॉन minus 1/2. You observe this 2 है डिनोमिनेटर में, तो this becomes 8/2 और x का वैल्यू कितना है minus 10/2. So x is equal to 4 और x is equal to minus 5. Alright, I hope you have understood this method. फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड दैट मैंने कुछ लास्ट टर्म का अलग फॉर्मूला दिया है. सेकेंड थिंग, डोंट वरी, ये फॉर्मूला करेक्ट है, सो यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट. नाउ लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन. सो वी हैव मोर क्वेश्चंस, हेंस आई एम नॉट रिपीटिंग कंप्लीटली. ऑलराइट, नाउ what is given? M square minus 5m is equal to minus 3. So luckily अपने को है ना, एक काम मैंने जो बोला था, यहाँ पे क्या बोला था, पहले कांस्टेंट टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, बाकी के सारे टर्म्स एक जगह रहेंगे. So luckily I don't have to do anything right now. ये तो राइट हैंड साइड पे ही है कांस्टेंट टर्म. अब मेरा काम चालू होता है यहाँ पे. दिस इज फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म वाला मतलब स्क्वायर वाला टर्म फर्स्ट टर्म है, और ये m वाला टर्म जो है ये मेरा मिडिल टर्म है. ऑलराइट, नाउ स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज माय फॉर्मूला? बार बार लिखोगे तो अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा. लास्ट टर्म
is equal to middle term square divided by 4 into first term. ओके, इससे क्या होगा, दिस विल बी मिडल टर्म दैट इज -5 का स्क्वायर, -5m का स्क्वायर, कंप्लीट टर्म उठाओ, कंप्लीट टर्म उठाओ, divided by 4 into m square. What will happen to the numerator? It is 25m square, 5 का square 25, m का square m square divided by 4 into m square. M square gets cancelled. What will happen? The last term is 25 upon 4. Last term is 25 upon 4. So what will happen to my problem? I will write the problem, m square minus 5 upon m plus 25 upon 4 is equal to, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया तो राइट हैंड साइड में ऐड करना मेरा जिम्मेदारी है, नहीं तो मेरा इक्वेशन इम्बैलेंस हो रहा है. सो -3 है यहाँ पे. So I added 25 upon 4 on both sides. So left hand side m square minus 5m 25 upon 4 is 25 minus 12 upon 4, इधर डिवाइड बाय 1 आया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए. ना m क्या बोला था, सिंपल सी चीज है, इसका स्क्वायर रूट इधर आएगा, इसका स्क्वायर रूट इधर आएगा. कैसे आएगा, यहाँ पे 25 अपॉन 4 का रूट कितना आएगा, 5 अपॉन 2, करेक्ट है, स्क्वायर आया, राइट. बीच वाला साइन, ये जो साइन है उठाना है यहाँ से. सो लेट मी अगेन रिकन्फर्म इट. इसका स्क्वायर रूट इधर आया, इसका स्क्वायर रूट इधर आया, एंड ये जो बीच वाला साइन है ये उठ के इधर आ गया. दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड. विल बी इक्वल टू 25 माइनस 12 कितना है, 13 अपॉन 4. Now if I take the square root, what will happen is m minus 5 upon 2 will be equal to रूट 13. 13 का स्क्वायर रूट मुझे मालूम नहीं है, तो रूट 13 अपॉन 2 प्लस और माइनस, दैट मीन्स m माइनस 5 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू रूट 13 अपॉन 2. एक प्लस होगा और दूसरा होगा माइनस. सो m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 13 अपॉन 2. हेंस क्या होगा, यहाँ पे m का वैल्यू 5 अपॉन 2 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और m का वैल्यू 5 अपॉन 2 माइनस रूट 13 अपॉन 2. सिंप्लीफाइड वर्जन, इसका रूट 13 का कुछ नहीं कर पाएंगे, सो विल कीप इट एज इट इज. तो m इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और m का वैल्यू 5 माइनस रूट 13 अपॉन 2. ऑलराइट, सो लेट मी शो यू द वन मोर प्रॉब्लम. ना ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के किया है, पहले दो प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस थे, राइट, रिपीट काइंड के प्रॉब्लम्स थे, बट यहाँ पे 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2, राइट. इन द टेक्स्ट बुक what they have done is x स्क्वायर का अगर 1 छोड़ के, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 छोड़ के कोई भी कोएफिशिएंट आता है ना, तो उसको वो पहले डिवाइड कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में. तो ये करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, right. Let me explain you this problem. If you have this problem solved in the text from the textbook, you can compare this. So पहला काम क्या करना है मुझे, 9y square minus 12y is equal to minus 2. 9y square minus 12y is equal to minus 2. Alright, क्या है मेरे लिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, मेरा मिडिल टर्म है, राइट. और मुझे क्या बताया है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर, बार बार लिखोगे तो अपने आप बाय हार्ट हो जाएगा, 4
divided by 4 into first term. What is middle term? Middle term is minus 12. Remember, minus 12y का whole square divided by 4 into first term. बिंदास पूरा टर्म उठा के लेके आओ यहाँ पे 9y square, right? 144 y square डिवाइडेड बाय, मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं पूरा बिकॉज अपने को कोई जरूरत नहीं है उसको, राइट? सो 4 इंटू, पहले तो 9 1 जा 9, राइट? 9 6 जा 54, सो इट इज 16 अपॉन 4, मतलब मेरा लास्ट टर्म कितना बनेगा? 4 बनेगा. ना लेट मी स्टार्ट वर्किंग सेम वे. अगेन आई एम रिपीटिंग, टेक्स्ट बुक में पहले 9 से डिवाइड करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वैसे करने की जरूरत नहीं, बिना किए भी आंसर आ जाएगा. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4 is equal to 4 minus 2. Okay, remember that I am not saying that textbook is wrong. I am saying कि उसके सिवा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. Now what will happen to this? This is 3y plus 2 का होल स्क्वायर. आई एम सो सॉरी, इधर प्लस 2 नहीं आएगा, इट विल बी माइनस 2. माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. हाउ? देखो, मैंने एक सिंपल सा आइडिया बताया था, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और ये वाला साइन. ओके, नाउ what will be 3y minus 2 in that case? 3y minus 2 is equal to plus or minus root 2. That means 3y minus 2 के दो वैल्यूज आएंगे. 3y minus 2 can be written as root 2 or 3y minus 2 can be written as minus root 2. Alright, that means 3y का वैल्यू है 2 प्लस रूट 2 और 3y का वैल्यू है 2 माइनस रूट 2. एंड देन फाइनली y इज 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3. ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, मैं यहाँ पे बता के रखता हूँ. देखो यहाँ पे इफ आई राइट दिस, यहाँ पे y का वैल्यू, अच्छा ये जो पहला वाला 2 है ना, वो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 और y वंस अगेन पहला वाला y जो 2 है दैट कैन बी रिटन एज रूट 2 into root 2 minus root 2 upon 3. तो इसको और भी सिंप्लीफाइड वर्जन रख सकते हैं. इफ आई टेक रूट 2 कॉमन, दिस विल बी रूट 2 प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 3 और y कैन बी रिटन एज रूट 2 कॉमन divided by 3. All right, so these are the possibilities. Okay, so this is all about okay, well, let us take one more question. So this is again, look at this. जैसे बोला मैंने 5x स्क्वायर, तो पहले तो कांस्टेंट टर्म को सिर्फ राइट हैंड साइड पे रखना है, बाकी तो एक ही जगह रहेंगे, राइट? वो एक जगह लेके आए हम लोग. ऑलराइट, 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. Let us understand, this is my first term and this is my middle term. Okay, what is the last term? Last term is middle term square divided by 4 into first term. उससे क्या होगा? Middle term square. What is middle term square? Middle term is minus 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज 5x स्क्वायर, 16x स्क्वायर
divided by 4 into 5 into x square. So x square straight away gets cancelled. 4 4s are 16. So my last term is 4 upon 5. Okay. Now, so 5 x square minus 4x प्लस 4 अपॉन रूट 5. मैंने लास्ट टाइम ऐड किया 4 अपॉन रूट 5. जब लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड भी बनता है ऐड करना. ऑलराइट. तो आई एम सो सॉरी, इट इज नॉट 4 अपॉन रूट 5, इट इज 4 अपॉन 5. रूट 5 तो बाद में आएगा. 4 अपॉन 5. Alright, so this will be 5x square minus 4x plus 4 upon 5. Okay, यहाँ पे this will be equal to 4 plus 35 upon 5. Alright, now this is left hand side देखो, root 5 x minus 2 upon root 5 whole square is equal to 39 upon 5. Okay, understand once again, square root इधर आ गया, इसका square root, इसका square root इधर आ गया, and ये बीच वाला साइन आ गया इधर. Alright, तो now this is root 5x minus 2 upon root 5 is equal to plus or minus root 39 upon root 5. What will happen now in this case? Root 5x minus 2 upon root 5 is equal to root 39 upon root 5 or root 5x is equal to minus ऑलराइट. सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे कर रहा हूं मैं ऊपर थोड़ा. सो रूट 5x is 2 upon root 5 plus root 39 अपॉन रूट 5. ये एक वैल्यू हो सकता है, या फिर रूट 5x is 2 upon root 5 minus root 39 upon root 5. Okay, now what will happen? Root 5x is 2 plus root 39 upon root 5. This is the first possibility. Second possibility is root 5x is 2 minus root 39. Okay, upon root 5. My job is not over because I want the value of x. So what will be x? X is 2 plus root 39. Okay, now understand this. ये root 5 cross multiply होगा. Root 5 into root 5 is 5. Same here, x is 2 all right, and that's it. So the next method, now this method was completing the square method. The next method is formula method. That is the last method to solve the problems, which will be taking up in the
next class. So I will stop here for this session right now. Okay, but before that I would like to again reiterate कि अगर आपको इसमें कुछ doubts है तो you can feel free and send it on this number. This is my office number. So once I receive on WhatsApp, I will solve the question. If required, I'll record a video and send it back to you. Right? So wish you all the best right now. We'll be coming soon for the next method, that is formula method, which is again very interesting. You will be using this throughout next year. So first method and third method are important for us in terms of knowledge and in terms of usefulness. Second method हम लोग ज़्यादा use नहीं करेंगे आगे चल के. All right. So see you in the next class. Thank you very much.